रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक MCQs में खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में इंतहाई अहम सवालात की बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट इन सेनेट वाज? 100 seat. Option D. Correct answer. Next question. According to 1973 Constitution, what is the term of the office of President? 1973 के आईन में ऑफिस प्रेसिडेंट के लिए कितना टर्म मुकर्रर किया था? 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 58 टू बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट। आर्टिकल 58 टू बी 1973 के आईन का ये किसके मुतलिक था? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। ऑप्शन द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many articles were there in Constitution of 1956? How many articles were there in Constitution 1956? 234 articles. 234 आर्टिकल्स थे 1956 के आईन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many articles were there in 1962 constitutions? 1962 के आईन में कितने आर्टिकल्स थे? 250 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many articles were there in 1973 constitutions? 1973 के आईन में कितने आर्टिकल्स थे? 280 आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स? कादियानीज। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन फातिमा जिन्ना डिड जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1939? Option E is the correct answer. Pakistan national flag was prepared by. पाकिस्तान का कौमी झंडा था ये तैयार किया था अमीरुद्दीन कदवाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय। पाकिस्तान का जो मयारी वक्त था ये सजेस्टेड किया था, तजवीज़ दिया था प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन 3 जनवरी 1948। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पाकिस्तान का जो सिक्का था ये जारी किया था 3 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? झेलम। कहाँ पर सबसे बड़ा नमक का कान वाक़या है पाकिस्तान में? झेलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर सिंध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे जो लंबी दरिया है पाकिस्तान का वो रिवर सिंध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल जासमीन। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज जासमीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Which is the national bird of Pakistan? चकोर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है. How started Faraizi movement? हाजी शरियतुल्लाह. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हाजी शरियतुल्लाह ने फराइजी तहरीक शुरू किया था. कशफुल माजूब was written by हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Who reviewed the book, famous book, The Indian Muslims in 1872? Sir Syed Ahmad Khan. Option B is a correct answer. Sorry, option A is a correct answer. Indian Council Act 1858 was passed on 2nd August 1858. Option E is the correct answer. The book Khutbat-e-Ahmadiyya is written by option D, Sir Syed Ahmad Khan. Is option D is the correct answer. Book Khutbat-e-Ahmadiyya ये किसने लिखी? Sir Syed Ahmad Khan. Next question. Indian Independence Act was enforced on 14th August 1947. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये नाफिज हुआ था 14 अगस्त 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन. अल्लामा इकबाल ने तारीखी अलाहाबाद का जो खुतबा दिया था 1930. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब? 1849. Option C is a correct answer. At the time of independence, which community was in majority in the state of Kashmir? आज़ादी के वक्त में कौन सा कम्युनिटी अक्सरियत में था कश्मीर में? मुस्लिम्स. ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Which state was attacked by India on 11 September 1948? State of Hyderabad, Deccan. Option E is a correct answer. In which year the Kashmiris started their freedom movement against Dogra rule before partition of subcontinent? 1930. Option B is a correct answer. Next question की तरफ आगे बढ़ते हैं. In which of the following cities Indian National Congress was founded? किस शहर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई? बम्बई. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following cities All India Muslim League was founded? ढाका. All India Muslim League की बुनियाद कहाँ पर रखी गई? ढाका. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. Who was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? Lord Curzon. Option A is a correct answer. पार्टीशन के वक्त बंगाल का इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन. Who was the first president of All India Muslim League? Sir Aga Khan. Option is a correct answer. In which year Aligarh Trusteeship Bill was passed? 1889. Option D is a correct answer. 1889. In which year Syed Jamaluddin Afghani died? 1897. Syed Jamaluddin Afghani वफात पा गए 1897 में. What was the real name of the Tamir Mia? Nasir Ali. Nasir Ali. Tamir Mia का असल नाम Nasir Ali. Option A is a correct answer. Next question.
Which pass connect Pakistan with Afghanistan? खैबर पास, ऑप्शन ए बी इज ए करेक्ट आंसर। यानी वो पास जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास वो खैबर पास हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज इज सकेसर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। Which pass connect Pakistan with Afghanistan? Khyber Pass. Next question है which mountain range is located in Sindh province? Kirtar, option C is a correct answer. Kirtar range. Pakistan conducted nuclear test. Pakistan conducted its nuclear test. Pakistan